Hi, and welcome back to Arun by Inside Learning Hub. This is Sumit Chaudhary, and you are watching Manual Testing series. Today, we discussed about the 7 principles of software testing. So let's begin. Testing is an essential part of software development, as you know. The problem is that software testing is extremely difficult and requires substantial resource. So you need to enhance the testing process to ensure you put out the best quality. These principles of software testing describe how testing engineer or software tester should develop code that is error-free, clear, and maintainable. According to International Software Testing Qualifications Board, the 7 principles of software testing are, as you can see in the picture, uh, testing shows the presence of defect. Second is exhausting testing is impossible. Third is early testing, and fourth is defect clustering, and fifth is pesticide paradox, and sixth is testing is context dependent, and the last, absence of error fallacy. So let's move to next slide to understand all these principles in detail. So let's begin. Okay. So first is testing shows the presence of defect. You test software to identify problem as you can fix them before deploy the software to product environment. However, this process does not mean that there is any bug in the product. It is just mean that there are many maybe bug, but you don't find them. There could be any number of reasons that you don't uncover every bug, including the fact that the test case does not cover every scenario. The principle which help to set stakeholder expectations mean that you should not guarantee that the software is error free. That means every person has a different mindset, and every person using a product of it with their mindset. Okay, so might be the bug is raised by the user is not a bug. Okay, suppose I am a layman and I am using a Flipkart, and I have no understanding of the concept of the Flipkart, and I am facing some problem. Okay, might be I am using the Flipkart wrong way. Okay, so the problem which I am facing, this is a issue for me, for according to me. Okay, but this is not meet the requirement, or this is not a exact issue. Okay, this kind of issue we are facing from the user side. Okay, so that's why we are saying that the product is not 100% defect free. Okay, okay, so let's jump into the next. To existing testing is not possible. Testing is very difficult, as we discussed already. The truth is that you cannot test everything. That's why we are saying that testing is impossible. Testing is very difficult. Sorry for that. For example, every combination of
preconditions and input, and if you trying to do so, you waste time and money, but it won't affect the overall quality of the software. What you need to do is assess risk and plan your test around this risk, so you can be sure your testing is the key functions. Careful planning and essential ensure your test coverage is good, so you can have confidence in your product, and you don't even have to test every individual line of code. As we can see in the example, why it impossible to achieve existing testing. Assume we have to test an input field which accept test between 18 to 20. Okay, so we do test the field using 18, 19, 20. In case the same input field accept the range of 18 to 100, then we have to test using input such as 18, 19, 20, 21, 22, and so, and 99 and 100. It is basic example. You may think that you could achieve it using automation tool. Imagine the same field accepts some billions value. It is impossible to test all possible value due to release time constraints. Okay, so if we keep on testing all possible test condition, then the software execution time and cost will be rise. So instead of doing existing testing, risk and prioritize will be taken into a considering whilst doing testing and estimating testing effort. Okay, so for achieving that, we are create 3 test cases on this. For taking the example of 1 to 100 field. Okay, अब कोई एक फील्ड है जो 1 से लेके 100 वैल्यू एक्सेप्ट कर रही है, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्या कि मैंने 3-4 सिनेरियो बनाए, ठीक है। सपोज एक नेगेटिव के लिए कि मैंने नेगेटिव वैल्यू -1 पहले डाल के देखा बिहेवियर कैसा आ रहा है, ठीक है। मैसेज चेक किया, फिर मैंने 0 डाल के देखा क्या मैसेज आ रहा है, क्योंकि जो फील्ड है वो 1 से लेके 100 तक एक्सेप्ट करनी चाहिए, ना कि -1 ना कि 0, तो मुझे मैसेज आना चाहिए, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि मैंने 1 डाल के देखा तो एक्सेप्ट कर लिया, फिर मैंने एक बीच की वैल्यू ली 50, अब 50 वैल्यू एक्सेप्ट कर ली, फिर मैंने 100 जो लास्ट की वैल्यू वो डाल के देखी, फिर मैंने डाला 101 जो कि नहीं करना चाहिए क्योंकि वहां 100 तक की लिमिट है, ठीक है। तो अब ये तो हो गया सिंपल सिनेरियो कि हम नेगेटिव पॉजिटिव टेस्ट कर लिया। अब और भी नेगेटिव निकल के आते हैं कि स्ट्रिंग वैल्यू तो नहीं ले रहा, स्पेशल कैरेक्टर तो नहीं ले रहा, है ना, स्पेस तो नहीं ले रहा, है ना, लाइक दैट। दिस इज द काइंड ऑफ बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस एंड इक्विवेलेंस पार्टिसिपेंट। ओके, so that's the reason we are saying that existing testing is not possible. Early testing, when it comes to the software development life cycle, testing early is the key to identify any defect in the requirement or design phase as soon as possible, as we already discussed in the previous video in the defect cost of defect. Okay, when defect can rise, okay, you can refer the previous video from this series. Okay, so it is much easier and less expensive to fix bug in the early stage of testing than at
at the end of the software life cycle, as then you might have to rewrite entire areas of the functionality and the likely mean missing deadline and cost. So that's why we are saying that testers should involve from the early phase, from the zero phase. Okay, from the zero phase. Testing should understand the requirement. Tester should involve in the requirement gathering meeting to understand the requirement of the customer and to understand the customer mindset and the client mindset. Okay, as a tester, we should understand the end user mindset. Okay, so if we are involved in the from the early stage, in the zero phase stage, then we understand the requirement easily and the mindset of the user, so we can create the test cases very effectively that help to ensure the product is bug free. Now, okay, next slide is okay. So defect clustering and pesticide paradox. So first is defect clustering is the idea that a small number of software module or component contain the most defect. Short of applying the Pareto principle of software testing, approximately 80% of the issues are found in the 20% of components. Okay, understanding this can help in your testing, because if you find one defect in particular area, you will likely find more in that some module. If you identify the complex area that are changing the most or the ones that have more dependencies, you can focus your testing on these key areas of risk. Okay, side paradox. These principles center around the theory that if you repeatedly use a particular pesticide on your crops, the insect you are trying to kill or repel will eventually become immune to the pesticide and will be no longer will effective. Likewise, if you are continuously run the same test, eventually they will fail to find new defect, even though they will probably confirm that software is working. Okay. Consequently, if you must continue to review your tests as well as add your scenario or modify them to help prevent this pesticide paradox. For example, maybe you could use a variety of testing technique, method, and approach simultaneously. Okay, so that means हमने कितना भी उस समय 100 और 100 से 150 टेस्ट केसेस बना दिए, ठीक है, 100 से 150 टेस्ट केसेस बना दिए और हमने दे दिए, ठीक है, और रनिंग करते टाइम हमारे दिमाग में कोई ना कोई एक नया सिनेरियो निकल के आएगा ही, एक सिनेरियो कम से कम एक तो निकल के आएगा, अरे यार ये तो छोड़ गया, अब क्या होगा, उस समय आप टेस्ट केसेस अपने करोगे, उसे रन करोगे, आपके पास टाइम भी कम है, क्या पता ऐसे और भी सिनेरियो जो छूट गए। इसीलिए आपको टाइम टू टाइम अपने टेस्ट केसेस, सपोज आज आपने बनाए दे दिए, कोई बात नहीं, लेकिन आपने अगले दिन या जब भी आपको थोड़ा टाइम मिला तो आपको टेस्ट केसेस अपने रिव्यू करने चाहिए या किसी और से भी रिव्यू कराने चाहिए, ठीक है। उससे होगा क्या कि आपको एक नए सिनेरियो मिलते चले जाएंगे और वो बहुत हेल्प करेंगे आपकी टेस्टिंग में, ठीक है। और नए सिनेरियो हमेशा क्या होता है कि जब नई चेंजेस आते हैं, नए रिक्वायरमेंट आती है, तो जरूरी नहीं है कि जो आपके पुराने मॉड्यूल है वो पुराने टेस्ट केसेस से ही टेस्ट हो जाएंगे। अब क्या होगा, जो आपके नए मॉड्यूल है, नए चेंजेस है, उन पे पुराने वाले मॉड्यूल पे भी तो इम्पैक्ट होगा, ऑब्वियसली होगा, क्योंकि एक दूसरे से जुड़ा हुआ है पूरा फ्लो, ठीक है।
अब आपको वो उसमें अपडेट करना ही होगा, नहीं करोगे तो आपको कुछ ना कुछ सिनेरियो छूटेगा, वो जो छूटेगा वो बग होगा। ठीक है, तो दैट्स द रीजन आपको टेस्ट केस कवर रिव्यू करने चाहिए टाइम टू टाइम। नेक्स्ट चलते हैं, टेस्टिंग इज कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट। Software testing is all about the context, which means that no one strategy will fit every scenario. The type of testing and the method you use totally depend on the context of software or the system. Okay, for example, अब बैंक की वेबसाइट को अगर आप फ्लिपकार्ट के कॉन्सेप्ट से टेस्ट करोगे तो वो तो हेल्पफुल नहीं होगा ना। सपोज आप किसी कंपनी में थे, अगर आप एक्सपीरियंस हो, मैं ये न्यू के लिए नहीं है, ठीक है, या न्यू के लिए भी है। सपोज आप फ्लिपकार्ट आप चलाते हो, बैंकिंग भी आप यूज कर रहे हो, आप टेस्टर नहीं हो सपोज, है ना, जो आप वीडियो देख रहे हो मेरा, सपोज आप टेस्टर नहीं हो, लेकिन एक समझो चीजों को कि आप फ्लिपकार्ट यूज कर रहे हो, तो फ्लिपकार्ट पे हम क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट खरीदते हैं, कोई प्रोडक्ट हमने देखा बाय कर लिया, ठीक है। और बैंक में हम अपने ट्रांजेक्शन या स्टेटमेंट हम देखते हैं, या कोई भी नया जो फीचर जो बैंक का आया है, एफडी खुलवाना, आरडी खुलवाना, या और भी चीजें करते हैं सिर्फ बैंक से रिलेटेड, ठीक है। फेसबुक में हम क्या करते हैं, 3 महीने यहाँ पे प्रोजेक्ट ले लिए, एक बैंकिंग का, एक फ्लिपकार्ट का, और एक बैंकिंग का, एक फ्लिपकार्ट का, और एक फेसबुक का। फेसबुक में करते क्या, देखो फेसबुक में हर एक तरीके का पर्सन सर यूज करता है, पढ़ा लिखा भी, ठीक है, लेमैन भी, ठीक है, बॉय गर्ल, बूढ़ा, बच्चा, जवान, यू नो लाइक दैट। सो अब क्या है कि हर एक प्रोडक्ट को अलग नजरिए से, हर एक अलग मैकेनिज्म से टेस्ट करने की जरूरत होती है, ठीक है। हम फ्लिपकार्ट को एक वो कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे कि हाँ, जो प्रोडक्ट की लिस्टिंग है वो दिखनी चाहिए, प्रोडक्ट का नाम आना चाहिए, प्रोडक्ट का प्राइस आना चाहिए, यू नो। आप जब फ्लिपकार्ट को देखोगे, प्रोडक्ट का नाम लिखा होगा, प्रोडक्ट का थोड़ा बहुत डिटेल, थोड़ा बहुत यू नो शॉर्ट फॉर्म में उसके टाइटल पे लिखा होगा, और एक प्राइस लिखा होगा, ठीक है। बट जब आप उस पे अंदर क्लिक करोगे तो और डिटेल में लिखा होगा, क्या साइज है, कितना वेट है, यू नो लाइक दैट, कितनी गारंटी है, कितनी वारंटी है, कितनी देर में आएगा, आपके एरिया में अवेलेबल है, यू नो लाइक दैट, ठीक है। और बैंकिंग को आप फ्लिपकार्ट के टेस्ट केसेस से नहीं टेस्ट कर सकते, उसमें एक अलग सिनेरियो निकल के आते हैं, ठीक है। तो दैट्स द रीजन टेस्टिंग इज कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट। आपको हर एक सॉफ्टवेयर एक अलग तरीके से टेस्ट करना होगा। अगर आप बैंकिंग डोमेन से आए हो, किसी प्रीवियस कंपनी में आप बैंकिंग डोमेन से थे, जैसे आप फ्लिपकार्ट सॉरी पेटीएम, फोन पे, या कोई ऐसी जो पेमेंट में डील करती है, जो प्रोडक्ट उस कंपनी से आए हो, और अब आपकी जो नई कंपनी है वो फ्लिपकार्ट या अमेजोन है, तो आपको वो माइंडसेट जो आपको उधर था इधर चेंज करना पड़ेगा। आप यहाँ इस प्रोडक्ट के लिए, इस डोमेन के लिए नए हो, ई कॉमर्स साइट के लिए नए हो, या आप मेडिकल डोमेन में जाते हो जहाँ मेडिकल से रिलेटेड, तो उस डोमेन के लिए बिल्कुल नए हो, ठीक है। आपको एक्सपीरियंस की चीज क्या है कि आपने टेस्टिंग आती है, टेस्टिंग प्रिंसिपल आपने पढ़े हैं, नेगेटिव टेस्टिंग क्या है, पॉजिटिव टेस्टिंग क्या है, फंक्शनल टेस्टिंग क्या है, ये सारी चीजें आपने सीखी। बट आपने जो मेडिकल डोमेन का टेस्ट किया वो अलग है, ये अलग है। चलो, अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, थोड़ा मैं लंबा ही चला गया समझाने के लिए। अब आते हैं absence of error policy. If your software is 99 bug free, it's very important, guys, to understand as a tester. It is does not follow your customer's requirement. It is still not usable. That's why it is critical to run tests that pertain to the requirement of the system. Software testing is just about finding bugs
it is about ensuring that the software meets the customer needs and requirement. As such, you should also test your software with the user. It's not, I can say it's not possible, but you can test your software with client. Okay, you request the client, please provide in the end of, at the time of release, you can request your client provide your resource, one of resource to review with me. Okay, testers is also involved on that. So you can test again early prototype at the usability testing phases, so you can get feedback from the user, or we can say client, that you can use to ensure the software is usable. Okay, even though your software might have relatively few issues, does not mean it is ready to ship. uh, it is also to meet your customer requirement and expectation. अब इसीलिए ये अलग अलग मेथोलॉजी आई है जो अभी अजाइल वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो. ओके, अभी हम क्या करते हैं, अभी शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कि हम प्रोडक्ट बनाते समय कोई एक मॉड्यूल बनाया, क्लाइंट को बुला, क्लाइंट के साथ मीटिंग करी, या क्लाइंट खुद आ जाते हैं अपडेट लेने. तो उससे होता क्या है, क्लाइंट को मैंने कुछ पार्ट दिखा दिया कि हम अभी यहाँ तक हमने अचीव कर ली है रिक्वायरमेंट, आप एक बार देख लो आपको क्या फीडबैक. तो उससे होगा क्या कि हमें फीडबैक मिल गया, उससे कस्टमर को भी लगेगा कि हाँ मेरा काम हो रहा है. दूसरा, हमें पता चलेगा कि हम कोई गलत ट्रैक पे नहीं जा रहे हैं. ठीक है, गलत ट्रैक पे नहीं जा रहे हैं. सो गाइस, आई होप यू अंडरस्टूड the concept and you like the video. To show your feedback, please like the video and share it with your network. Please, this is very important. Please share it with your network. अगर आपके यूज का नहीं है, सपोज आप सॉफ्टवेयर टेस्टर नहीं है और आप ये वीडियो देख रहे हो, तो आप ऐसे कुछ शेयर कर सकते हो जो सॉफ्टवेयर टेस्टर बनना चाह रहा है या सॉफ्टवेयर टेस्टर है. ओके, ये 7 प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है एज ए बिगिनर और एज ए एक्सपीरियंस होल्डर, चाहे वो 10 साल एक्सपीरियंस है 11 साल. ठीक है. ओके, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, सजेशंस एंड फीडबैक रिलेटेड टू दिस वीडियो और प्रीवियस वीडियो, देन फील फ्री टू कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन. आप कोई भी कमेंट, किसी भी तरीके का कमेंट, कुछ भी आप कमेंट कर सकते हो. योर कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू. आपका प्यार हमें एक्सेप्ट होगा, हमारी टीम को. ओके, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, ओके, देन प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपडेटेड video notification. Guys, thanks for giving your valuable time to watch this video. Thanks.